पानी बचाना क्यों बेटर है? लगता है कि 72% पानी से गिरा है, मतलब हमारे पास बहुत पानी है, बट फ्रेश वाटर बस 3% है, बाकी सब है सॉल्टी वाटर। So when the Western country became from developing to the developed country, there was no such Paris Agreement, Kyoto Protocol. At present, our economy is based on 70% on fossil fuels. We have to create a balance somewhere between the development and also the entire environmental pollution. क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, सुनने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, बट वो 40 छोटे छोटे सोल्यूशन से होती है। अगर हम थोड़ा वाटर कंजर्वेशन, थोड़ा पोल्यूशन कम करेंगे तो उसकी वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। College youth are creating green clubs in each of the colleges. For last 2.5 years, they have saved 30 million cubic liter of water. It is a 5 days of water supply to the entire Mumbai city. UNICEF primarily is a organization which is dedicated towards children's welfare all around the world. How is UNICEF also attached to Mumbai Climate Week? Don't become climate anxious, become climate conscious. We're all here to discuss about the Climate Week, which is happening in Mumbai. So it is called Mumbai Climate Week. It is on the lines of New York Climate Week and London Climate Week. It's a big congregation of people from all around the world who are into environmental studies, who study about climate change, who are concerned about it, who want to do something about it, and who want to let people know how can we contribute as people of the world, as our country, as our state, our cities, our provinces, our little towns. How can we all contribute to this huge possibility of climate changing, and our actions or inactions subsequently, leaving its footprints on the climate change environmental studies. To elaborate on this, we have two very special guests with us. Yusuf Kabir ji, who drives the climate and environmental action for UNICEF. Chandani Sunil Singh is a class 10 student, and she is a champion warrior, in fact, on climate and environmental studies. Let me start with you, Yusuf bhai. What is global warming? What is climate change? Are they separate from each other, or are they happening in conjunction with each other? Is global warming leading to climate change, or is climate change leading to global warming? So if you could elaborate a little on this. And also, UNICEF primarily is a organization which is dedicated towards children's welfare all around the world. How is UNICEF also attached to Mumbai Climate Week? Thank you, Amit, for hosting us, for both of us. And it's our pleasure. And I think, yes, you very rightly pointed out that there are so many words are very frequently used, like climate change, global warming, environmental pollutions. And sometimes these words become so scientific, it becomes very difficult for a common person to understand or unpack it. So let me tell you a very simple example. That climate change is very natural. We had the ice age before industrialization. What is happening is the unpredictability or the climate variability. And often the climate change is induced by human beings. So I'm just give you some example. We are adding to the change, like the change which has happened to be in a normal pace, Which is, of course, a very slower pace. Yeah. of our different practices which are not environment friendly. The change is happening very fast, and at the same time certain oceans are also warming very fast, like Pacific Oceans is one of the example. They're warming very fast. And of course, one of the major reason, of course, the carbon dioxide emission, but there are also other emissions like methane emission, nitrous oxide emissions. I'm not getting into the scientific or chemistry or geography classes, but coming back to your questions, like what is most becoming very difficult, it is so unpredictable, it's becoming very difficult to even do any kind of forecasting model also. Like we are seeing, just take the case of example of Maharashtra. Last year, 2025. We have seen drought prone areas was totally flooded, like Marathwada.
They have never seen flood in last 40 years. One generation has not seen flood for the last 40 years. Yeah, the monsoons have been sometimes coming late, sometimes early, sometimes little, sometimes too much. So what you said exactly, the seasons are shifting. So that the swapping trend, that drought becoming flood, flood becoming drought, and also we are seeing microclimate. Like in a small district, one place of the part of the district is facing water scarcity, the other part is facing water logging or the flood. And same for the cities also. Like in the summer, some of the cities are bringing tankers in India, but in the monsoon, those cities are flooded all over India. So the thing is that it is more that how we can build resilience or adapt with the changing environment, because climate change is happening and is going to happen. The variability is going to increase, the unpredictability is going to increase, but how we can adapt and make ourselves resilient to that changes, so that the impact, so that we have less exposure to the impact, and also we can stand those shocks which are coming out from the climate change. Oh, this is a great point, because we always we listen to or hear about or see people discussing climate change as if it's just about climate change. I like the fact that you're saying that we are discussing in this particular Mumbai Climate Week about the possibility of adapting to the climate changing and what it does to our environment and how can we cope with it, correct? Right. And my second question, sorry, how is UNICEF, why is UNICEF attached to this? Yes, why use UNICEF? Of course, UNICEF, we are the convener of the entire Child Right Convention that you know, which is ratified by the most of the countries, and we are focusing on the child rights agenda. So we believe that the climate crisis is a child rights issue. So recently, our Child Right Convention is ratified, and the entire climate change and child right agenda has been included. Recent judgment of 2025 of Supreme Court in Article 14 and Article 21, they have clearly said that every citizens and populations have a right to stay in a safe and cleaner environment. Now coming back to the why children and environment. Now India is the youngest country, and it's going to be youngest country till 2034. Our population of children 0 to 18 years is 436 million, which is 33% of India's population. So every third person in India is either below 5 years or below 18 years. And globally, it is something around every fifth child or youth is from India. So how to utilize the demographic dividend? Because if we are a failure, then the impact will be to those children and the young people who has nothing to do with our failure. So in 2047, often our Honorable Prime Minister has spoken many times that what kind of earth, city or village are we going to give our future generation in 2047 when India having their 100 years of independence. So that's why UNICEF is focusing very much on the children and the youth agenda, because of utilizing that demographic dividend. And we are the youngest country, and the population size I just mentioned, it is more children population, it is more than the population of many countries. But at the same time, when the policies are made, there is very little scope for the children and the youth to participate. But thanks to Honorable Prime Minister, in COP26 in Glasgow, he launched a very interesting program called Mission Life with 75 low-touch action points. How can you do actions at your local level? Like you don't have to wait someone else to do the action. Actions are very much at the local level. It's like one of those things where they say that education starts at home first. We, as a whole, I think personally I feel this, that we lack a lot, when we talk about education that starts at home, and with various things, with just starting from cleanliness, and
of course, everything impacts your environment, everything impacts your climate, right? So UNICEF India office is very much engaged with the Merry Life program. So they have created a Merry Life applications. It is available in all the platforms. Can you elaborate on this? So Merry Life is nothing but 75 actions. When India becomes 75th years of independence, so Honorable Prime Minister thought of why can't we just, it's a metaphor of the 75th year of independence bringing 75 actions. There's a very low touch action. Suppose today I decided that I won't take a bath from shower. I will take a bucket bath. Correct. You will every time you will be saving water. Yes. You decided that I'll be using washing machines only once, not 2 or 3 times. Of course, plantation is there, beach cleaning drives are there. You decided that you'll be doing carpooling. You decided that you'll be focusing more on at your level, at the school level or the college level, water conservation activities. Then Merry Life has also a very interesting activity called creating eco clubs and the green clubs in the schools and colleges. Like in Maharashtra, we're running a very interesting program called Youth Engagement and Water Stewardship in 13 water state districts, where the college youth are creating green clubs in each of the colleges. Some 1800 plus colleges are there, and 1 million youth are engaged. So till date, for last 2.5 years, they have saved 30 million cubic liter of water. I just give you what is the 30 million cubic liter of water in a metaphor. It is a 5 days of water supply to the entire Mumbai city. Wow. Only by doing some low touch actions. Yeah. At college level, at their family level, and also amplifying to their community level. Similarly, we have NSS. NSS runs many camps in India, in Maharashtra. So this time NSS went to some 20,000 odd villages, and they created a recharge pit for the recharge of the water. Only it is the youth. So this is the way UNICEF try to integrate with the government system, that it is not only the actionable solution, but it has to be sustainable. Yes. And to make it sustainable, yeah, it cannot just become a fad statement. Yeah. You know, कि आज किया और कल नहीं किया और परसों भूल गए. Yeah, exactly. It has to become your lifestyle. So UNICEF always try to work with the government to institutionalize it with the government system. So that is why we prefer that if anyone can bring change to the society and with a scale, it is of course government, and of course civil society organizations and citizens are played a very key role. Yeah. But of course, both state government and the government of India are doing a lot of things in the climate crisis issues. But as you know that India, recent data from the German Watch and WHO, that India is the 5th most climate hazard country. So we have to face the battle. As we all know, India is a developing country. Since the time of our independence, you know, slowly but steadily we've been evolving, we've been growing. But with that growth comes a lot of urbanization, a lot of industrialization, a lot of automobiles, a lot of land development. And like recently I went and shot this beautiful film called Tikram. It's very uncanny that I'm doing this right now with you. I think that film probably led me to do this because it talks about climate change and you know, looking after your environment through the lens of 2 kids. So I play the father of those 2 kids, and it also at the same time tackles the problem of migration from our smaller cities to bigger cities in search of work, employment and stuff like that, you know. And it very innocently touched all these topics that you're saying, you know, which is saving the trees, saving our forests, saving our land resources, not polluting our land, not polluting our rivers, or you know, stuff like that. But the thing is, which I wonder, that एक तो we are a huge country है ना, इतना बड़ा देश है और इतने सारे लोग हैं. हम लोग, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, you know, but
अपनी अपनी एक पर्सनल लाइफ जब आप इंसान जीता है, यू नो, उसके अंदर ये सब भी इनकलकेट कर पाना, यू नो, मुझे लगता है ह्यूमंगस टास्क है। और अगर हम लोग यही सब चीज़ें माइक्रो लेवल पे ले आएँ, यू नो, तो मैं अपने माँ बाप को कितनी बार बोल चुका हूँ कि घर में थोड़े पेड़ लगा लो, पौधे लगा लो, बट अब उनका मन नहीं है तो नहीं है, यू नो, उनके लिए रिटायर्ड लाइफ मतलब मैं कुछ नहीं करना चाहता, यू नो। बट मेरे रूट्स जो हैं वो किसी भी गांव से, किसी भी कंट्री टाउन से ऐसा नहीं रहे कभी भी, क्योंकि मैं आई ऑलवेज बीन अ सिटी बॉय। और मुझे इस बात का बहुत मलाल रहा है। आई बीन, यू नो, I've always wanted to be associated with कि just like my other friends कि यार मैं अपने गांव जा रहा हूँ, तो मैं भी किसी को बोलूँ कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ, you know। तो वो कमी पूरी करने के लिए मैंने अपने घर पे, अपने छत पे पेड़ पौधे तरह तरह के, इनफैक्ट ह्यूज मैंगो ट्री आई पॉटेड, a huge chiku tree, lemon tree, guava tree, all this. So it makes me happy, you know. बट ये कितना आपको लगता है कि कितना आप पुश कर पाओगे लोगों को, कितना सस्टेनेबल और सेल्फ रिलायंट ये हो सकता है, यू नो। एंड यूर राइट कि जिनका माइंडसेट बन गया है उनके साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते। जिनका माइंडसेट आप क्लियरली अब उसको एक रोड नेटवर्क दे सकते हो चलने के लिए, वो ऐसे लोग हैं, यू नो। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एक तो कैसे इन्वॉल्व हो इस कॉज में, और आप किस तरीके से इस कॉज को आगे करने के लिए आपका क्या योगदान है? इन्वॉल्विंग के लिए बोले तो फिर इन्वॉल्व तो वैसे ही सबको होना पड़ेगा एक ना एक टाइम, बिकॉज अगर आप अपने तरफ से कुछ पुश नहीं करोगे क्लाइमेट चेंज के लिए, देन इट विल बी नेवर हैपन, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। उसके लिए सबकी ज़रूरत लगती है। और मैं बेसिकली सबको बस बताना चाहती हूँ कि क्लाइमेट चेंज सुनने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, बट वो चालू छोटे छोटे सोल्यूशन से होती है। अगर हम थोड़ा ये इस साइड से हेल्प करेंगे, वाटर कंजर्वेशन, थोड़ा पोल्यूशन कम करेंगे, थोड़ा थोड़ा सामान अगर हम कम करेंगे, तो उसके वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। सो इट्स तो मोर देन एनीथिंग, सबसे पहले हम लोगों को बताना चाहिए कि हाँ क्लाइमेट चेंज होता क्या है। सब लोगों को लगता है कि क्लाइमेट चेंज इज ह्यूज प्रॉब्लम। इसमें जो हम लोग रहते हैं, जो पीपल्स कैन नॉट डू एनीथिंग, इसमें गवर्नमेंट को सब कुछ करना चाहिए, हम लोग कुछ नहीं। एनीथिंग विल हैपन, गवर्नमेंट की गलती है। कहीं पे भी रास्ते पे कचरा देखते हैं तो फिर वी थिंक कि लाइक गवर्नमेंट की गलती है, उनको साफ करवा लेना चाहिए। तो अगर आप मॉर्निंग में निकलोगे तो देयर आर गवर्नमेंट फैसिलिटीज हु आर क्लीनिंग दी रोड्स, बट एट द लास्ट एंड ऑफ द डे हमारी ही गलती रहती है कि हम लोग कचरा फेंक देते। देन ये सो मोर देन एनीथिंग, सबसे पहले लिटरिंग नहीं करना चाहिए हमको। जितना क्लीन जगह रहेगा उतना ज्यादा कहते हैं ना कि एनर्जी पॉजिटिव रहती है। क्यों आपको लगता है इनको समझ में नहीं आता हम लोगों को? ये मेनली हमारे बचपन से होता है, जब हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग, क्योंकि जो हमारा बचपन का फेज रहता है ना, हमारा चाइल्डहुड, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की फेज रहता है कि उस टाइम पे जो हम देखते हैं वो हम सीखते हैं। अगर जैसे हमारे पेरेंट्स रहते कि वो लोगों को अगर कैरी करना चाहिए कचरा, अगर उनने फेंक दिया, हम हमारे आसपास देखते कि हाँ सब फेंक रहे, सब कर रहे, तो मैं भी करता हूँ, ये हमारा एक माइंडसेट बन जाता है। और फिर जब ये आगे आता है तभी हम नोटिस करते हैं कि हाँ चलो सब लोग कर रहे हैं, मैं भी फेंक ही देता हूँ, क्या ही हो जाएगा, कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवेंचुअली अगर हम देखें तो हमारी कंट्री इतनी लकी है क्योंकि हमारे यहाँ पे हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे डस्टबिन है। बाहर की कंट्रीज में बहुत दूर दूर पे डस्टबिन और एकदम सेपरेटेड, सूखा कचरा गीला कचरा। हमारे यहाँ पे डस्टबिन है, यू शुड पुट, नहीं वो लोग बैग में कैरी करते हैं, फिर जाके जहाँ पे डस्टबिन मिलता है वहाँ पे। और वी हैव सच अ नाइस कि लाइक हर शॉप के बाहर डस्टबिन मिल जाएगा, यू कैन जस्ट पुट इन दैट। और अगर डस्टबिन नहीं भी हो तो यार बैग में रख लो, जेब में रख लो, घर जाके फेंक देना जहाँ मिले वहाँ। हाँ, डस्टबिन में हमको कचरा फेंकना चाहिए। मेन इज द प्रॉब्लम इज लिटरिंग। फिर एयर पोल्यूशन आ जाता है। आजकल सब लोगों को बस ये है कि मैं सिंगल पर्सन हूँ, लेट्स गो इन टैक्सी। इवेंचुअली अगर बहुत कम एरिया भी है ना, फिर भी हम लोग टैक्सी बाइक्स ये इस्तेमाल करते, जो इतना ज़्यादा एम्बिशंस करते, जो हमारे नेचर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के, इवेंचुअली हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अभी एग्जाम्पल लूँगी मैं दिल्ली की। दिल्ली में इतना पोल्यूशन होता है कि एक सांस लेते हैं ना, या फिर 1 आवर 2 आवर का, तो हम 1 से 2 सिगरेट फूकते। एक से दो नहीं, मतलब कुछ पता नहीं 40-50 सिगरेट। कितना ज्यादा हार्मफुल होगा। उधर बैन मतलब कि स्कूल बंद हो जाते हैं क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग ये अभी मुंबई में हम लोग उतना फेस नहीं कर रहे हैं। वी आर थिंकिंग कि अगर हमारा AQI जो है, अगर वो कम है
कंपेयर टू दिल्ली, तो वी आर थिंकिंग हाँ दिल्ली से कम है, लेकिन है ज़्यादा। So carrying forward our conversation, और क्या क्या किया आपने, और आप यूनिसेफ से कैसे रिलेटेड हो? सो बेसिकली जब भी मैं मेरे स्कूल टाइम में थी, तभी जब भी ये सब न्यू था इंडिया में, मोस्टली लोगों को पता नहीं था। आपको कब पता चला कि ये सब इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट? 8th स्टैंडर्ड में, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ना बाहर की कंट्री से इन्फ्लुएंस्ड हूँ, उन लोगों के रहने से, उन लोगों की क्लीनिनेस से। मेरे को बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के बारे में जानने। पीपल आर जस्ट फाइटिंग कि हमको ये सारी फैक्ट्रीज बंद करवानी है, बहुत ज़्यादा ये पोल्यूशन होता है। क्लाइमेट एंड चेंज पता था, बट व्हाट इज मीन बाय क्लाइमेट चेंज वो मेरे को इतना नहीं पता था। सो फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की, एकदम बेसिक्स, तो मेरे को समझा ओके क्लाइमेट चेंज मीन्स लाइक चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट विच इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन्स। सो द मोस्ट थिंग जो हम कर सकते हैं वो है एक दूसरे को बताना। मैंने कुछ ट्रीज भी प्लांट किए विद स्कूल्स। फिर एक और होता है हमारा वाटर कंजर्वेशन। हमने पहले जब भी पहले हम सुनते होंगे कि जो स्मॉल चॉल्स टाइम थिंग रहता है, उधर पहले लड़ाइयाँ होती थी पानी के लिए कि हमको बकेट भरने का, हमको पानी चाहिए। लेकिन अब ऐसा है कि अभी हमारे पास नल्स है, हमको डायरेक्ट पानी मिलता है। सो वी डजंट केयर अबाउट वाटर, जितना वेस्ट हो रहा है होने दो, क्या ही जा रहा है। पानी बचाने का कॉन्सेप्ट जो है ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। पानी जिनके पास अबंडेंस में आ रहा है, उनको बचाना है उस पानी को, ताकि वो पानी जो लिमिटेड रिसोर्स है वो बाकी लोगों को, जैसे मान लो कि आपने जो पहले बोला था कि एक दिन शावर नहीं लिया, बकेट से नहा लिए, वाटर बॉडी है, पानी इवेपोरेट हुआ, ठीक है, बादल बना, बादल बन के वो कहीं चल के गया, उस जगह पे बरसा। पानी तो है ही, पानी तो कहीं नहीं जा रहा है। जितना पानी अर्थ में था पहले, जब पॉपुलेशन कम होगी या नहीं होगी, पानी तो उतना ही होगा ना। पानी कहाँ जा रहा है? तो हम लोग उस पानी को हार्नेस नहीं कर रहे हैं ठीक से, उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारा अर्थ है वो बेसिकली 72% तक पानी से घिरा हुआ है, बट हमको लगता है कि 72% पानी से घिरा है, मतलब हमारे पास बहुत पानी है। बट इसका मेन डिफरेंस है कि हमारे पास फ्रेश वाटर बस 3% है, बाकी सब है सॉल्टी वाटर। हाँ, मतलब जिसमें नमक रहता है, जो ओशंस रहते हैं मेनली, ठीक है। अभी इसमें जो 3% है फ्रेश वाटर जो हम पी सकते हैं, तो ये 3% को हमको यूटिलाइज करने का। अभी जैसे आपने बोला कि वो इवेपोरेट होता है, अभी आपने बोला कि वो चल देता है, मीन्स इट्स गोइंग। अब हमको पता नहीं कि वो फ्रेश वाटर बन के वापस से फ्रेश वाटर के एरिया में गिरेगा, फर्दर कि वो जाके सॉल्टी वाटर में गिरेगा। अगर वो सॉल्टी वाटर में गिरा मतलब वो सॉल्टी हो गया। मैं तो टेस्ट ले रहा था आपका बस। I think what Chandani told, I think it's amazing, and that's why I coming back to your first question, like why we are investing for the children and the environment, because they are the future champions, and you have said that there are certain mindset which you cannot change, but they are the early acceptors. जो दिखता है उसको they are moldable, so that's why we are investing on the children and youth. Now coming back to the water case, yeah, it's a very interesting thing that it seems that we have a lot of water. We have a lot of water. I'm just giving you some example. India groundwater extraction is more than the total groundwater extraction of China and USA. A good point. That is why I mentioned that point. Ki is it happening that we are as the government of our country unable to provide water to everybody? That is why they keep digging bores and they keep using the groundwater instead of water being supplied to them. So let us take the example of the rural area first, then I'll come to the urban areas. Like climate change is impacting the people and the children disproportionately. People who have access to resources, knowledge, उनको मिल जाता है। समझ लीजिए किसी सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है, they immediately call the water tankers. But it is not happening with the villages. Now coming back to some of the issues. Now just to take an example of जैसे चांदनी ने कहा कि only 3% पानी is fresh water. But within that 3% fresh water, 99% is used for agriculture, irrigation and industry. Only 1% is available for drinking water. And there is a trade-off between the water for the drinking water and water for the agriculture. So there's always a conflict. And in many cases, many states,
they have given a subsidy to the pumps, agricultural pumps, electrical subsidy to take more water from the ground. And that way, that's why you're depleting the groundwater, and many chemical contamination is coming up, like fluoride, arsenic, nitrate. I use a very simple metaphor, like if suppose you have a savings account and you have a fixed deposit, we are touching the fixed deposits, not using the savings account. So our groundwater is a more like a fixed deposit which is being generated, stored after millions of years. Yes. And we're extracting the groundwater, which also requires your electricity bill. Now I understand. So to replenish that, it will take hundreds and hundreds of years for the earth to do it automatically, right? So that's why you need to do some kind of artificial recharge of the groundwater. Now, where do you recharge? Like, जमीन ऐसा है, लेकिन जमीन के नीचे का जो एक्वीफर जिसको बोलते हैं ऐसा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे रिचार्ज करेंगे, वो दूसरे गांव में भी जा सकता है. तो that's why we use a what called demand side management. तो आप अपना खेती बाड़ी में कैसे कर सकते हो? मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप गन्ने का खेती मत करो, क्योंकि गन्ने का खेती is a water guzzling crops, क्योंकि उसका आपको अल्टरनेटिव भी देना पड़ेगा. But can you use some kind of a drip irrigation or micro irrigation in the sugarcane cultivation? Can you go for certain kind of crops which requires less amount of water? So wherever there is a impact for the women or children and adolescents, youth, you will find UNICEF. So who is more impacted when you are not getting water in the house? It is the women of the family. In many cases, we have seen that during the drought, there is a shrinking food basket. Drought के समय leafy vegetables मिलता नहीं है. आपका ये भी foders नहीं मिलता है, इसीलिए आपका milk भी नहीं मिलता है. तो your food basket gets shrink. और उसमें सबसे impact किसको होता है? Adolescent girls का, women का. I call it as a food water energy nexus. Yes, so it is it's more like you cannot see this in silos. It is more like a vicious cycle. So that's why UNICEF, that's why we always focus on the social return on investment for any climate adaptation program. Now I understand what UNICEF is doing and what the government and how beautifully our government is trying to help, orchestrate this, and why you're putting all your energies into this basket of young people, because they are impressionable, they want to understand things, and they not only understand it, they enact upon it. And they are the 30% force of India. I think in this case, this is the best link to focus your goals and objectives onto. So that's coming back to the water part. That's why the UNICEF is very much getting into the food, water, energy nexus. So we are also running a very interesting program on this entire issue of the cotton farming linked with the pesticide pollution. Yes. And it has been seen that the cotton farmers, those who pluck the cotton, 99% are women. Or some cases, their adolescent girls are also there. And they are spraying the pesticides without having any mask, any cover, nothing. And there's a global data that the pesticide pollution for a pregnant mother, its impact their placenta. They are working under immense heat wave. If a pregnant mother is working under an immense heat wave, maybe in the agriculture field or a construction labor, it impacts the cognitive development of the brain of the child. So, but when you speak about many people about the climate change, they will go for the built environment, like घर को सोलर लगाएंगे, घर को हम लोग white painting करेंगे, वो सब करेंगे. मैंने कहा that is fine because you have the resources. But think about those marginalized, vulnerable people. They mostly come from the tribal communities, those who are staying in the coastal belt, especially Bay of Bengal. These days, Arabian Sea also behaving like Bay of Bengal. So many cyclones you have seen. Then tribal belts. Then the semi-arid area of Rajasthan, some parts of Maharashtra, some parts of Telangana, that part. Deccan Trap, hard rock where you cannot recharge. The weather has become catastrophic. Catastrophic, yeah. In India and around the world. For sure. But what we are trying to say that again the adaptation resilience and the
right information at the right time. Often there is a, so always we say one thing, that don't become climate anxious, become climate conscious. Are you part of the pollution or part of the solution? Yes. So that is the thing, that if you become climate conscious, there's a lot of also myths around climate, that world is going to die after seeing a lot of movies and everything. So it has an impact on the mental health. Climate change and mental health also coming up very prominently. Like I was interviewing few of the kids in Marathwada in this monsoon. So they were scared. I remind me of the tsunami thing, that for the first time they saw flood, how flood looks like. Yeah. Because it came after 40 years. Shambhajinagar, some of the districts in Marathwada, they face flood. They never face flood. It's a drought-prone area. Yeah. So things are changing, but so that's why we are also, government of Maharashtra is running a very interesting program called Maji Vasundhara on the 5 elements of the earth. And in the Maji Vasundhara, we have integrated climate change and environment curriculum for the first to 8th standard of the school syllabus. This is of utmost importance, I think. You've already answered it for me, because I wanted to come to this. Like I'm an actor, right? And recently I was talking to somebody, and they asked me whether introducing theatre as like a fixed subject in curriculums of schools, would it help? I said it will 100% help. Right. Because it helps in not just one way, it helps in many ways, and ways which we're probably not even aware of right now, and I think that should be done as a compulsory subject. We have an EVS subject, but it is still not a compulsory thing, like whether you pass or not. But government of Maharashtra has taken a very good step. Even the government of India, NCRT, is revising their entire syllabus. Like I give an example, the DY Patil University in Mumbai, yes, based on our course and everything, they started a 4 years degree program on climate and environment. Fantastic. Many colleges have integrated 1 or 2 credit courses. So as you very rightly said, that okay, they may not be working in the climate field, but it also brings certain kind of a confidence, leadership. I can see Chandani is speaking in such kind of platform. Often these people do not get the chance to speak any platform. First of all, they don't have access to the platform. Because they think it's only for the elitists. It's elitist, and it's an elder problem. No, it's not. And she's not a baby, right? She's formed her own identity. She's got her own personality. She has her own mind. She knows, I think, 10,000 times more than me on this subject. So yeah, we need to hear them, because they have concerns about it. So they need such kind of platform, and also we focus on that the language should not be barrier for any kind of a thing. 100%. Because any language, so that's why we say that climate change is impacting the children disproportionately. So those who have access to knowledge, information, they are better prepared. Those who do not have access to knowledge, information, resources, they are not prepared, and they are facing their challenges. See, when we live in a city like Mumbai, it's got all facilities available, right? There's electricity 24/7, there's water supply, regular water supply, there are big, small cars, buses, trucks, infrastructure, road. Are we pulling all resources to one center and neglecting other centers? is it the I'm trying to say कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा डिसबैलेंस्ड कर दिया है क्या? जैसे कि हमारे इकोनॉमिक्स में इतना डिस्पैरिटी है हमारे देश में, इकोनॉमिक्स बिटवीन पीपल एंड फैमिलीज एंड दिस एंड दैट, आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर बट आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है? नहीं, बिकॉज रूरल एरियाज में लोग माइग्रेट कर रहे हैं इन सिटीज लाइक दिस. अगर यहाँ पे ज्यादा लोग आएंगे तो फैसिलिटीज ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है यहाँ पे कंपेयर टू रूरल एरियाज. अगर हम थोड़ा सा इंडिया के मैप के ऊपर साइड जाए, बिहार, यूपी, एमपी साइड, झारखंड साइड, वहां पे से लोग माइग्रेट होके मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सारे साइड्स आ रहे हैं. और अगर हम देखने जाए तो ये सारे साइट्स का नेम सबसे ज्यादा लिस्ट में ऊपर रहता है पोल्यूशन के मामले में, बिकॉज पीपल्स आर कमिंग हियर, दे आर स्टेइंग हियर एंड दे आर यूजिंग फैसिलिटीज.
which may cause pollutions. So मेरे ख्याल से अगर देयर इज वन मोर रीजन कि इसमें हो सकता है गवर्नमेंट की गलती, बिकॉज अगर गवर्नमेंट वहां पे फैसिलिटीज देती, बिकॉज किसी को अपने फैमिली को छोड़ के बाहर जाना रहना पसंद नहीं है, अगर गवर्नमेंट उस साइड ही फैसिलिटीज देती तो पीपल विल नॉट कम हियर. उधर फैसिलिटीज नहीं है, दैट्स व्हाई पीपल पुअर पीपल्स आर कमिंग मुंबई दिल्ली एंड लिविंग हियर. हम एज अ कंट्री जो है एक विशिष्ट सर्कल में फंसे हुए हैं. यू नो, climate change is also concerned with demography, you know, with population, with कि इतने सारे लोगों को काम पे कैसे लगाएं, है ना, इतने सारे लोग धंधा पानी कैसे कमाएं, और हर एक अपनी एक जोग्राफिकल लोकेशन की अपनी एक वो होती है, सैचुरेशन पॉइंट होता है, यू नो. तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि वी क्रिएटिंग सैटेलाइट सिटीज़, जो कि हो भी रहा है. बट दिस इज़ ऑल अ वेरी स्लो प्रोसेस, यू नो. आपको क्या लगता है कि कितना अर्जेंट है इसको और स्पीडिफाई करना? I think it's a very valid question. Like when I was studying my environmental economics, one of my professor used to say that how can you sustain and develop at the same time? So he gave the definition of a sustainable development. What is that? They're meeting the needs of the present generation without compromising the needs of the future generation. But at the same time, also the mindset. When I go to few of the villages, तो से दे हाँ, so से बोलो कि हमारा विलेज शहर जैसा हो गया. Why that aspiration? Exactly. हमारा विलेज शहर जैसा हो गया. So there are 2 villages in Maharashtra, जैसे मैं बात कर सकता हूँ. There will be lot of such villages, जैसे रालेगन सिद्धि हिवरे बाजार है, जहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन हुआ है. जो लोग गांव छोड़ के शहर चले गए थे वो गांव में वापस आ गए. सो दिस एस्पिरेशन इज ऑल्सो वेरी डेंजरस कि गांव को शहर बनाना. हाँ, ये चीज से हमको निकालना पड़ेगा. और इसमें वो गांव भी नहीं रहता है, शहर भी नहीं रहता है, बीच में फंसा रहता है. तो मैं आपका 1 सेकंड के लिए आपको रोक के ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं शहर छोड़ के गाँव में जाऊँ, जो कि मेरे पास कभी था नहीं. एक फार्मलैंड खरीदूँ, वहाँ खेती बाड़ी करूँ, अपना सब्जी फल उगाऊँ, अच्छे से उगाऊँ, बिना पेस्टिसाइड के उगाऊँ. आई थिंक आप लोग बहुत अच्छी जगह पे हो. उस जगह की अच्छाई को समझना चाहिए, यू नो, और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए. जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रहा 4-5 साल ना, तो वहाँ पे किसी को कोई एस्पिरेशन नहीं है कंट्री टाउन छोड़ के. मतलब कुछ लोगों को होगा ऑब्वियसली फॉर हायर पर्पस वॉट एवर, यू नो, कि जो आपको अवेलेबल नहीं हो सकता गांव में. बट ये आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला है कि गांव को शहर क्यों बनाना है. एनीवेज, आगे. तो अभी जैसे महाराष्ट्र का जीडीपी का अगर बात करते हैं, महाराष्ट्र का जीडीपी का क्या है कि सिर्फ महाराष्ट्र का टोटल जीडीपी का सिर्फ 15% एग्रीकल्चर से आता है. तो उसका मतलब है कि एग्रीकल्चर में इतना पैसा है नहीं. तो देयर इज नो चॉइस कि लोग जा रहे हैं आपके आइडर इंडस्ट्री में जा रहे हैं, या जैसे चांदनी ने कहा शहर में चले आ रहे हैं. चांदनी ये सिर्फ यूपी बिहार में नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र के गांव से भी लोग मुंबई में आ रहे हैं, पुणे में आ रहे हैं, नागपुर में आ रहे हैं, नासिक में आ रहे हैं, संभाजी नगर में आ रहे हैं, काफी सारे, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ टाउन्स इन महाराष्ट्र एंड इट इज अ वेरी अर्बनाइज्ड स्टेट. जैसे केरला, तमिलनाडु बहुत ही अर्बनाइज स्टेट है, महाराष्ट्र इज द 3rd मोस्ट अर्बनाइज स्टेट. तो ये भी एक चीज है कि हम लोग किस तरीके से इस पूरे पर्सपेक्टिव को देखें. मतलब रातों रात कुछ चीज चेंज नहीं होने वाला है. और एक चीज है मीडिया. अब क्लाइमेट चेंज में कुछ अच्छा काम हुआ है, ये फ्रंट पेज में कितने बार आता है मीडिया में. सिर्फ जो नेगेटिव है उसको हाईलाइट करो, यू नो, पॉजिटिव को हाईलाइट ही मत करो. जस्ट टू कंक्लूड दैट पॉइंट, शायद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनिसेफ तो है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो मुंबई क्लाइमेट वीक के साथ जुड़े हुए हैं, भारत सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है. There is a very good scope to bring those champions from the cities, metro cities, tier 1, tier 2 cities, villages, and give them a platform to share the good practices, how they have changed on their own. सिर्फ पद्मश्री का मत सुनो, ऐसे बहुत पद्मश्री घूम रहा है. ऐसे बहुत पद्मश्री घूम रहा है अपने इसमें, क्योंकि सरकार के लिए सबको तो पद्मश्री देना मुश्किल है, लेकिन उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरत है. सबसे बड़ा पद्मश्री जो है सबके लिए, इंडिविजुअल के लिए, जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है और वो शेयर करना चाहता है,
सरकार से करे, अपने आसपास के लोगों से करे. What exactly are we aiming to do and address in the Mumbai Climate Week? So idea was, why Mumbai? Mumbai is a crazy city, in a good sense, crazy city. Like, the city has amazing resilience. After 2005 flood, city has seen so many floods, but you have not seen so many deaths. They have people come out with their own resilience, kind of a thing. It is a cosmopolitan in nature. It has its own challenges. It has its own plus points. Though it's a Mumbai Climate Week, but it is a India Climate Week. It will be one of the thing after COP30 just concluded. So after COP30, Mumbai Climate Week. So, and of course, so for me, it is a citizens-led movement totally, and with certain organizations are playing, where UNICEF is also playing a very critical role there, and we are a part of very much as a knowledge partner, and also at the part of a youth engagement partner. It's more like a joyful learning. I often use the word joyful learning. How can you learn climate change joyfully? These good people are trying to achieve is that, as Yusuf bhai said, it's they want to convert it, or rather they are looking at it as a citizen-led movement. You know, so responsibility rests on us, not always on the government and on the elite set of bent of mind, where you know, there's a cascading effect happening from above, that oh, they'll fix something up for us. No, it's our responsibility to fix it from downwards to upwards, right? And I think it's every huge change starts from down here rather than up there. I think it is high time we all take the onus upon ourselves to contribute in whatever little way we can, on an everyday basis, and continuously be at it. You know, it doesn't matter कि your आपका काम जो है, जो आपका जो योगदान है वो एक महीने में रंग नहीं लाया तो आपने उसको छोड़ दिया. हमें उसको करते रहना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है. और अगर आप थक रहे हो तो आप अपने घर में, आसपास में, मोहल्ले में, अपनी सिटीज़ में बच्चों की तरफ देखो, उनके इनोसेंस देखो, और आप अपने लिए मत करिए, आप अपने बच्चों के लिए करिए. यू नो, एंड आई थिंक गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी चाहे जितने भी कैंपेन्स निकाल ले, यू नो, it will not lead to anywhere without our contribution. So our contribution should be at the highest level, and it's call of the second, hour, minute, call it whatever, that we actually start working on it very, very deliberately and very consciously. So this is a beautiful endeavor, Yusuf bhai. I think I congratulate the Indian government, our Honorable Prime Minister, the Chief Minister of Maharashtra. If you would like to say something to our audiences, and whatever that comes to you. One key message where hope meets actions, and I believe one of the hope is that children like Chandani, they get a much safer and cleaner environment in the future. Chandani, you want to say something? Yes, it's like अगर हम लोग ये सोच के बैठेंगे ना कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोगों से सॉल्व नहीं होगा, तो देयर विल बी नथिंग हैपन. हम लोग जब भी हमारा एग्जाम भी देते तो भी हम स्टार्टिंग में अगर सोचेंगे ना कि वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो हमसे नहीं होगा. सोल्यूशन ऑफ बिग प्रॉब्लम्स स्टार्टेड विथ सॉल्विंग स्मॉल प्रॉब्लम्स. अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमारे क्लियर रहेंगे, तब जाके हम बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. कोई भी कंट्री में अफेयर रहता है तो हम लोग बस बुरा ही सोचते रहते हैं कि वो कंट्री ऐसी, वो ये ऐसा, या फिर कास्ट में भी रहता है, तो हमको सीखना चाहिए, अडेप्टेशन करना चाहिए. बस हमको अब अपने शहर और मौसम और एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करना है. थैंक यू.